Hello students, today we are going to do rest of the chapter of a chameleon. We were doing this chapter in the previous video. We were discussing that Ryukin was chasing the dog and he was bitten because he was bitten by that dog, and there was Chumilov, police superintendent, and he was seeing to the matter. He had complained to Chumilov and Chumilov was seeing to this matter. And today we will start from here. He put a cigarette in her face, Your Honor, for a joke, and she had the sense to snap at him. Somebody from the crowd is saying, we had seen that there was a big crowd, बहुत रश इकट्ठा हो गया सी तो उन्होंने जो एक बंदा बोल रहा है, he put a cigarette in her face, Your Honor, कि इसने मजाक दे विच ਉਹਦੇ फेस ते ਉਹਦੇ डॉग ਦੇ ਉੱਪਰ सिगरेट लाती सी. She had the sense to snap at him, so उन्हें उन्होंने कट लिया. He is a nonsensical fellow, Your Honor. ठीक है, ये मूर्ख आदमी है, Your Honor. That's lie, Squinty. तो ओकी दा ना ओकी कह रहा है कि Squinty ये झूठ है. तो जेड़ा बंदा बोल रहा है उसका की नाम है Squinty. You didn't see, so why tell lies about it? His Honor is a wise gentleman, and we'll see who is telling lies and who is telling the truth. उन्हें कि तुसी क्यों झूठ बोल रहे हो? ਜਿਹੜੇ अपना पुलिस सुपरडेंट साहब अपना बहुत इंटैलीजेंट बंदे ने देख लेंगे कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है. एज इट गॉड साइट एंड इफ आई एम लाइंग लेट द कोर्ट डिसाइड. उन्होंने कहा स्क्विंटी कह रहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोर्ट डिसाइड कर लेगा. स्टूडेंट इन द लॉ वी आर ऑल इक्वल नाउ इट इज़. माई ओन ब्रदर इज़ इन द पुलिस, लेट्स मी टेल यू. तो कह रहा है कि मेरा खुद का ब्रदर भी पुलिस है. आजकल सारे कानून के सामने बराबर ने. डोंट आर्ग्यू, बहस ना करो. नो दैट्स नॉट द जनरल्स डॉग. हूँ फिर कोई कह रहा है कि ये जनरल का कुत्ता नहीं है. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि when Chumilov came to know that the dog belonged to General Zhigalov, then his reaction had totally changed. So now somebody saying that's not the general's dog, says policeman with profound conviction. The general has not got one like that. His are mostly setters. तो कह रहे कि नहीं ये जनरल का डॉग नहीं है क्योंकि ਜਿਹੜੇ जनरल ਦੇ डॉग ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ? सेटर्स. Do you know that for a fact? तो पुलिस सुपरडेंट पूछ रहा है कि तुहानू पक्का पता है? Yes, Your Honor, I know it too. The general has valuable dogs, thoroughbred, and this is goodness knows what. No coat, no shape, a low creature. उन्हें क्या होता है तो बहुत वैल्यूएबल कुत्ते होंगे ने, बहुत महंगे होंगे ने. ते इस डॉग की ना कोई शेप है, ये तो बिल्कुल छोटा जा कुत्ता है. एंड टू कीप अ डॉग लाइक दैट वो इस तरह का कुत्ता रखेंगे. वेयर इज़ द सेंस ऑफ इट? नहीं. If a dog like that were to turn up in Petersburg or Moscow, do you know what would happen? कहते हैं अगर तुहानू पता है इस तरह का कुत्ता पीटरबर्ग या मॉस्को जाके की होएगा? They would not worry about the law. They would strangle it in a twinkling. तो वो कहते कानून की फिक्र किते बिना एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ. You have been injured, Ryukin, and we can't let the matter drop. कि Ryukin ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ. We must give them a lesson. It's high time. तो ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. Yet maybe it's general, says a policeman thinking aloud. It's not written on its face. कहते पर ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. I saw one like it the other day in his yard. It is the general's, that's certain. कहते नहीं ਇਹ ਤਾਂ general ਦਾ ਹੀ ਹੈ, says a voice in the crowd. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ general ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ 'ਚ. ਹੈਲਪ ਮੀ ਔਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕੋਟ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੁਮਿਲੋਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਡੌਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ. Yelden, my lad, the wind is getting up. I am cold. कहना हवा चल रही है, मैंने ठंड लग रही है. You take it to the generals and inquire there. तुसी इस डॉग ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੁੱਛੋ. Say I found it and sent it. कहने ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ. And tell them not to let it out into the street. It may be a valuable dog. कहने उन्होंने कहो इनू सांभ के रखन, एवें गलियां 'ਚ ना भेजन. ये कोई वैल्यूएबल डॉग महंगा कुत्ता हो सकता है. And if every swine goes sticking a cigar in its mouth, it will soon be ruined. कहने जे हर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. डॉग इज़ अ डेलीकेट एनिमल. एक कित्ता जोड़ा है डेलीकेट एनिमल होंगे, कोमल पशु होंगे. एंड यू पुट योर हैंड एंड इज सेइंग जस्ट अ मिनट down your blockhead. It's no use you're displaying your fool of a finger. It's your own fault. तो कहना तू अपनी उंगल थल्ले कर ले. Chumilov is talking to Ryukin. उन्होंने कह रहा है कि तू अपनी उंगल थल्ले कर ले, इन्हों दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये आपकी गलती है. सो वी हैव सीन स्टूडेंट्स कि आप देख रहे हैं दैट जो चुमिलोव ਨੂੰ पता लगता है
that the dog belongs to General Jigalov, who is one of the well known people in the society. तो ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ दैट what is the name of the what the title is referring to, who the title is referring to, title किन्हों refer कर रहे हैं, title is referring to Chumilov only because he is changing his stand again and again like a chameleon. Here comes the general's cook, ask him. तो कोई कह रहा है देखो जनरल दा कुक आ रहा है उन्होंने पूछ रहे हैं hi Prohar. So students, what is the name of the cook? Prohar. You very often you are asked this question in exam that what is the name of the cook of General Jigalov? So the name is Prohar. Come here my dear man, look at this dog, is it one of yours? कहते इधर आओ देखो कि ये ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता है. What an idea, we have never had one like that. कहते नहीं ऐसे तो इस तरह का कदा नहीं रखा. There is no need to waste time asking, says Chumilov. It's a stray dog. Chumilov ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ जनरल जिगलोव ਦਾ ਕੁੱਤਾ नहीं है तो कह रहे नहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. It's a stray dog, एक आवारा dog है. There is no need to waste time talking about it since he says it's a stray dog it is. It must be destroyed. That's all about it. कहते इन्हों destroy कर दो, इन्हों ख़त्म कर दो. It's not a dog, Prohar goes on. It belongs to the general's brother. कहते वो साडा dog नहीं है but वो general दे brother दा है who arrived the other day. जो एक दिन पहला ही आए ने, एक दो दिन पहला ही आए ने. Our master doesn't care for hounds but his honor is fond of them. कहते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡੌਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਡੌਗ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਚੁਮਿਲੋਵ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. You don't say his excellency's brother is here. कहते तू तो दसिया ही नहीं कि उन्होंने ब्रदर इत्थे ने. Vladimir Ivanich inquires Chumilov and his whole face beams with an ecstatic smile. Well, I never and I didn't know. Has he come on a visit? कहते अच्छा मैंने तो पता ही नहीं सी, तू भी नहीं दसिया कि वो आए हुए ने, क्यों मिलन आए हुए ने. Yes. Well, I never. He couldn't stay away from his brother. कहते हो अपने वो ब्रदर तो दूर नहीं रह सकते सी. And there I didn't know. So this is his honor's dog. कहते हाँ ये on जड़ा है उनका dog है. Delighted to hear it. कहते मैंने बहुत खुशी हुई है सुन के. Take it. इन्हें ले जाओ. It's not a bad pup. ये कोई माड़ा dog नहीं है. A lively creature. बहुत सोना कुत्ता है. Snapped at this fellow's finger. बस इन्हें थोड़ा जा इस आदमी दी उंगल ते कट लिया. Ha ha ha, come, why are you shivering? The rug's angry, a nice little pup. तो थोड़ा dog ਨੂੰ प्यार करता है. Prohar calls the dog and walks away from the timber yard with her. Prohar ਉੱਥੋਂ dog ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The crowd laughs at Haryukin. हर कोई Haryukin ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. I'll make you smart yet. ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ. Chumilov threatens him. ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. And wrapping himself in his great coat goes on his way across the square. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So here we come to the end of the chapter. So let's discuss the questions of this chapter. Where was the police superintendent Chumilov walking? Yes, he was walking in the market square. What was carrying under his arm? What was he carrying under his arm? He was carrying, yes, he was carrying a parcel. Who was walking after him? Policeman, a red-haired policeman. What was that red-haired policeman carrying in his hands? A confiscated gooseberries. Gooseberries ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਮਲੇ. Confiscated ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. Who was chasing the dog? Haryukin. Yes, next, why was Haryukin chasing the dog? Because he was bitten by the dog. What was Haryukin wearing? Haryukin ने क्या पाया हुआ? He was wearing an overcoat which was unbuttoned. What did Haryukin display to the crowd? He displayed a bleeding finger. How was Haryukin's bleeding finger a flag of victory? Because he wanted to get some compensation for that finger. So he was showing it as it was a flag of victory. So next question is, why did Haryukin think that he must have damages? वो क्यों सोचता है कि उन्हें damage मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए? Because he thinks that he is a fine workman, he is a goldsmith, so his work is a fine one. So he will have to stay without work for many days, so he must be compensated. क्योंकि वो हुन कई दिन काम नहीं कर सकेगा, तो उन्हें पैसे मिलने चाहिए ने. What was Chumilov's first reaction on Haryukin's complaint? वो दी first reaction की सी कि the dog must be strangled. इन्हों सजा जो dog दा owner है उन्हों सजा मिलनी चाहिए है.
Why did Chumilov later refuse to take any action against the owner of the dog? पर बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਡੌਗ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? Because he came to know that the dog belonged to General Jigalov, who is one of the well-known people of the society. What was police superintendent's opinion about the biting of the dog when he came to know that it was the general's dog? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਦਾ ਡੌਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ? He was of the opinion that this dog was such a small creature and it could not bite such a hulking fellow like Hurricane. तो ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਊਕਿਨ ਵਰਗੇ ਹਲਕਿੰਗ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? What did policeman tell superintendent about the general's dog? ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਡੌਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? You must have seen in the chapter. What did the policeman tell the superintendent about the general dog? He had told that this dog did not belong to general. Who was Prohor? Prohor was कौन सी Prohor? He was general's cook. What information did Prohor give about the dog? He said that this dog does not belong to the General Jigalov, but this dog belongs to his brother. Why did the crowd laugh at Hryukin at the end of the story? Because he was demanding compensation, but he was not given anything. So here we come to the end of the question, short questions, and if we talk about the long questions from the paper point of view, the important one is the character sketch of Chumilov and the title of the story. If you write a few lines about the title, that you will tell the meaning, what is the meaning of a chameleon, and the title refers to Chumilov, and after that you can add character sketch of the Chumilov, then your question will be prepared. तो तुसी बेटे दो क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विच आर मोर इंपॉर्टेंट. अगर तुसी 5th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कैमिलियन बारे दस के कि टाइटल तो कैमिलियन का की मतलब है, किदे बारे गल कर रहा है, उस तो बाद Chumilov द कैरेक्टर स्केच भी लिख दोगे तो इट विल डू. सो योर वर्क विल बी डन. So this is the end of the story and end of the chapter. So see you in the next video. Till then stay tuned. Thanks for watching. हाँ जी आ जाओ. की कह रहे थे? मेरे पास आए थे? अच्छा मुझे लगा इधर आए थे. अब आपका कोई पीरियड लग रहा है कैसे? किसी का नहीं लड़के अभी लकड़ी उठा रहे हैं. चलो जब फ्री हो जाओ, अगर फ्री हो तो फिर मेरे को बुला लेना.